कोणे बंधू ಬಳಗ मित्र कष्ट ना आमगेले वहिवाटा कष्ट मस्त नमने कष्ट असं ते कष्ट अडकून कशी बाहेर येऊ का म्हणाले भगवद्गीता आमका सांगता कशी अर्जुनाक सांगली की तशीची आमका हे भगवद्गीता उपदेश करता तेन्ना आम्ही कष्टार आशिल तेन्ना आमका आम्ही आलोचन करका आमका कसलं हे कष्ट येता हे कष्ट कशी परिहार करका म्हणे कोण निंगीत पळे बदलतो मनुष्य ना जाल्यार प्राणी समान आम प्राणीक आनी मनशाक कसले डिफरन्स ना आम्ही प्राणी मनकेची आम्ही निदताची तांणी निदताची आम्ही आहार खाताची तांणी आहार खाताची आम्ही आमगेले चेडू आमकां जाताची तांकांय चेडू जाताची तांणी दुसरे प्राणीना डिफेंड करताची आम्ही रक्षण कोण घेताची तशी आम कसले डिफरन्स ना मनशा आशिल्ले एक डिफरन्स म्हळ्यार चिंतन करचे प्रश्न कोण घेवचे म्हाका कसलो हे कष्ट येता हांव कोण हांव खंय दुखून आयिल्लो हांव मरतर खंय वता म्हाका कसलो कष्ट येता हे संकटा कशी परिहार करता म्हणून प्रश्न केल्यार तो परिपूर्ण मनुष्य म्हणून सांगताची तेन्ना आमकां ते प्रश्न केल्यार ताका आन्सर आमी सोदिता ते आन्सर खंय मेळटा भगवद्गीता मेळटा तशीच अर्जुन तो एक परिपूर्ण भक्त परिपूर्ण ज्ञानी आशिल्लो जाल्यार त्या कुरुक्षेत्र युद्धारी तो मोहमाया तू पडता म्हळ्यार हे बंधू ಬಳಗ तागेल पुरा जन पळोवन हांव युद्ध करना म्हणून म्हणटा आम्ही तशीच या नमुनवार मस्त नमर भौतिक प्रपंच कामांतू आम्ही बुड्डून देवाक विसरून गेल्याची बदल जावन आमगेले एक नित्य सनातन जावन आशिल्ले एक रिलेशन आशिल्ले देवाले आम्ही विसरून गेल्याची ते उडगास करता हे भगवद्गीता तशी आम्ही तेन्नाची आमगेले एक मानव जीवन आमकां मनुष्य जीवन कसला मेळ्ळा खावचे जेवचे खातीर मात न्ही आमगेले सनातन जावन रिलेशन जावन आशिल्ले ते भगवंता वट्टू ते रिलेशन संबंध अपास पुनरुज्जीवन करच्याक त्या खातीर आमकां हे मनुष्य शरीर मेळ्ळा हे आमकां भगवद्गीता ज्ञाना देखून मेळटा भगवद्गीता देखून आमी कसं शिकयता म्हणल्यार हातूं 5 तत्व आमकां शिकयता कसं म्हळ्यार एक ईश्वर आनी आमी आमकां केन्ना नियम आसा आमकां कशी जिवीन कशी वांचका म्हळ्यार ते नियम आमी नियम वट्टू आमकां आशिल्ले आमी जीव मागीर प्रकृती मागीर काल मागीर कर्म हे 5 वस्तू चर्च करून आसा आमकां गोत आसला म्हणकी सगळा गोत आसला म्हणटा आमी मस्त नमुनवार सगळं कर्म करताचे पुरा सगळे विश्वांतू नमुनवार आमी कर्म करताचे आमगेले जीवन निर्वाह करूंक आमी कर्म करताचे जाल्यार आमी हे कर्म कशी आमी देवाक खुश करची कशी कर्म करका म्हळ्यार भगवद्गीता आमकां सांगता देव कोण म्हळ्यार आमकां नमुनवार जन नमुनवार सकड सांगताची देव कोण म्हणून मागीर जीवात्मा आमी कोण ही प्रकृती म्हळ्यार कसं न्ही आनी हे विश्व सृष्टी म्हळ्यार कसं न्ही हे काल म्हळ्यार कशी याक पुरा कंट्रोल करता एक जीवी म्हणजे कसं नमुने कर्म करता कशी आमगेले कर्म अकर्म म्हळ्यार देवाक खुश करता कशी कर्म करता म्हळ्यार आमकां भगवद्गीता शिकयता आमी कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन म्हणून आमी सांगताची अरे हे कशी आमी कर्म करता जाल्यार तेजे फला खातीर आश करू नज म्हणून म्हणटात आमी तसल कसं कर्म करता ते आमकां भगवद्गीता सांगता तशी 11 अध्याय सांगता आमी जीवी म्हळ्यार हे आमी जीवी आमी शरीर न्ही आमी आत्मा हे आत्मा सनातन केन्नाय शाश्वत आशिल्लो सनातन म्हळ्यार आदि अंत्य नातिलो म्हळ्यार केन्नाय सनातन कशी भगवंत आदि अंत्य नातिलो तशीच ताजे अंश जावन आशिल्ले हे आत्मा हे जीव समेत सनातन म्हणून आतां 11 अध्याय सांगता तेन्ना आमकां भगवंता वट्टू एक लग्गी संबंध आसा ते संबंध आमी विसरून गेल्याची ते संबंध आमी उडगास करचेची भगवद्गीताचे उद्देश
आम्ही केन्नाय सांगला म्हण की आम्ही कसले काम करता आसाची ते कशी शुद्ध करता ते कर्म कशी शुद्ध करचे म्हणाले हांतू आमकां भगवद्गीता हांतू सांगला. देव कस हळूहळू अवतार घेतला. युग अवतार, लीला अवतार, शक्ती अवतार म्हणून मस्त मस्त अवतार घेऊन हे आमकां बद्ध आत्मा आमकां उद्धार करूक मस्त प्रयत्न देवान केला. तुमकां गोत असला म्हणजे युग अवतार म्हळ्यार आमकां नरसिंह अवतार जो तो वराह अवतार पुरा युग अवतार जाताची. मागीर लीला अवतार म्हळ्यार स्वयं कृष्ण येवन आमकां उद्धार करूक येवन आसता. मागीर शक्ती अवतार म्हळ्यार इवन आमगेल प्रभुपाद एक अवतारूच. मागीर आता कलियुग अवतार चैतन्य महाप्रभू स्वयं भक्त जावन येवन आमकां उद्धार करूक आमकां हरे कृष्ण महामंत्र दिले. तांतू सांगता माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण. चैतन्य चरितामृत सांगता कसं म्हळ्यार हे मुग्ध जावन आशिल्ले आमगे जिवाक विंगड कसले ना कृष्ण ज्ञानाची एक उपाय आमकां हांत दाखोवन उद्धार करूक म्हणून चैतन्य चरितामृतांतू सांगता आसाची कृष्णराज कविराज गोस्वामी. तशी चैतन्य महाप्रभू स्वतः येवन आमकां उद्धार घेवन येयलो. प्रभुपाद एक शक्ती भगवंताल शक्ती घेवन येवन आमकां पुरा जनाक उद्धार करू हे भगवद्गीता ज्ञान आमकां वाजूक इजी जावचे असेल पुरा भाशेन कितले 82 अबोव 80 वैरी लँग्वेजान पुरे ट्रान्सलेट करून पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड पूरा हे भगवद्गीता ज्ञान एक धर्म ने एक जाति ने एक देश ने प्रति क्रिश्चियन जो मुस्लिम जो अरेबी जो कौन प्रति एक जन पूरा चाइनीज जो पाकिस्तानी जो पूरा जन ये भगवद्गीता ज्ञान एक्सेप्ट करून ये एक धर्माचे ग्रंथ नाही म्हणून सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून आज गीता पठन करताची गीता ज्ञान एक्सेप्ट करता आसाची. तसले गीता आम्ही आजी वाजितास म्हळ्यार भारी खुश जाता आसा. कृष्णान मुरळी वाजून पुरा गोपाल जनाक गोपिकासरीक मुग्ध केले. तशी हे ज्ञान मुरळी गीता ज्ञान मुरळी सगळे विश्व जनाक आमकां मुग्ध केले म्हणून सांगता आसाची. तशी हांतू आमी केन्नाची गीता हांतू केन्नाय आमी सांगता आसाची. कसं म्हळ्यार गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि ना पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. भगवद्गीता श्रद्धेन गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च म्हळ्यार भगवद्गीता श्रद्धेन आणि प्रामाणिक जावन आम्ही अध्ययन तरी केली तर जाल्यार त्यांना भगवंताल कृपेन तागेल पुढली जन्मा पाप पुरा नाश जाता म्हणून सांगता. म्हळ्यार आम्ही श्रद्धेन हे नमका केन्नाय गीता ज्ञान ते प्रश्न करूक नाही एक्सपेरिमेंट करूक नाही. हे बद ज्ञान हाका तू नमगोन प्रामाणिक म्हळ्यार तू नमगन ते पठन केलं पारायण केलं आमगेल पूर्व जन्म पाप नाश जाता म्हणून भगवंतू गीता महात्म्यांतू व्हडान सांगता. आणि आमकां गोतस मलिने मोचनम पुंसा जलस्नानम दिने दिने सकृति गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम. म्हळ्यार आमी आमगे शरीर पूट कर दवरका जाल्यार क्लीन करका जाल्यार आमी नित्य गंगा स्नानम ना उदकान न्हावका. तेंची भगवद्गीता स्नानम केल्यार आमगेले पुरा संसार मलनाशनम म्हळ्यार आमगेले जीवनाचे पुरा चिक्कोल पुरा म्हळ्यार आमगेले कर्म पुरा सकट नाश जावन शुद्ध जाता. आमगेले कसले भितर आशिल्ली काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर हे पुरा षड्वैर्यಗಳು पुरा नाश जावन आमगेले हृदय शुद्ध जाता. हृदय शुद्ध जातना परमात्माला दर्शन जाता. दर्शन आमगेल हृदयाने प्रति जीव कणू भितर आमकां परमात्मा दर्शन जाता म्हणून सांगताची. आणि लास्ट एक सांग एक शास्त्रम देवकी पुत्र
गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा. एक शास्त्रम, एकच शास्त्र भगवद्गीता पुरं एक वाजला पुरं. मागीर देवकी पुत्र गीतम तेंचे एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम. देवकी पुत्र स्वयं कृष्णस्तु भगवान, देवकी पुत्र कृष्ण ताण सांगिले एक शास्त्र एक वाजलारी पुरो. एको देवकी देवकी पुत्र, एको देव एको कृष्ण. तुम्ही हजार देवी देवता थे तांक शरणू वचका म्हणना एकच देवा कृष्णाक शरण गेला पुरो. एक मंत्रस्य नामानि, एक मंत्र. ते कसं मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक मंत्र जप केला पुरो. यानी कर्मा अपेक्यम तस्य देवस्य सेवा. तशी कसले एक काम कसले तसल देवोत्तम परपुरुषाले सेवा त्या केल्यारी पुरो. आमगेले मनुष्य जन्म आम्ही घेतला सार्थक म्हणून आणि तू सांगता असं गीता महात्म्या तू सांगता असं. तश निमित्त आम्ही पुरा जन आता आम्ही पठन करूया. आम्ही शुद्ध मनानं भगवंताले कृपेक तागेल चरणार विंदाक नमस्कार करू हे गीता पठन करूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. केन्नाय तुम्ही भारी लायक करून भगवद्गीतेचे महत्व आणि भगवद्गीते ऑलमोस्ट एक समरी सारं सांगून दिले आमका. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. या मानव जन्मच आईल आम्ही उद्देशू कसं म्हणाली देवाला सेव करणं, देवाला भक्ती करणं, देवाला अनुग्रह पात्र जावचे म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतल्या. आता भगवद्गीते पारायण स्टार्ट करचे पुढे आम्ही मंगळाचरण सांगून गीता महात्म्य सांगून स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने. श्री वार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान तायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणी. नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते. गौरवीर्भाव भूमेष्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ. दिव्याद् वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव्यौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणु स्वनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रियेस्तुनः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता विद्या माताजी गीता महात्म्य सांगताची. विद्या, ओवर टू यू. हरे कृष्ण. गीता महात्म्यं. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतपुमान् विष्णुपादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरास्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलिनामोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीतकर्तव्या किम् अन्यशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद् विनिश्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धाद् गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. आता मी हिज ग्रेस माधवचरण प्रभुजी का हे करता निवेदन करता सची की त्यांनी आता आज भगवद्गीताच्या आरती करता सची. सो ओवर टू यू प्रभुजी.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha. Jaya Lita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Lalita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Jaya Girdhari Gopal Girdhari Gopal Girdhari Gopal Jaya Girdhari Gopal Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Hari Bol, राम संकीर्तन की जय गीता जयंती महामहोत्सव की जय। जय भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माधवचरण प्रभूजी आमकां आरती दाखयत आशिल्लें आमी पुरा घेवयात वा? हाँ हाँ हरे कृष्णा पुरा बांधव घेयाची आरती. हरि बोल आरती सर्व माधवचरण, हरि बोल. तुम्ही आमगे तन मन पुरा धन्य केला आजी आरती हें करून. खूब खूब आभार, धन्यवाद. हरि बोल हरि बोल हरि बोल. आम्ही मुखार सुचवा माधवचरण प्रभूजी. हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आयचे भगवद गीता रिसिटेशन भाग घेतिल्ल्या सर्वय बांधवांका स्वागतु सुस्वागतु. सो तुमकां कसने सूचना दिवका म्हणून हांव लेखना कसले म्हळ्यार तुमगेल्या चॅप्टराचे ऑर्गनायझरान चंदुकोन तुमकां पुरा सांगून दिलेला आसा पुरो. हांव वापस रिपीट करना. सो तुमकां पुरा गोत आसा. सो हांव आतां वापस सांगून टायम वेस्ट करना. ओके, नेक्स्ट भागवत पुराणा कोंकणी टिमात गेल्या प्रयत्न आणि सखड बांधवांक गेल्या सहकार आणि कृष्णाले आशीर्वादांत आमी हे कार्यक्रम सुरू करूया. हरे कृष्णा. फर्स्ट चॅप्टर आमी सुरू करच्या वचा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा रचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्मत्कामं तु विशिष्टाये तानि भोजद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मद अर्त्यक्तजीवित नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारद अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सज्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनञ्जोचौ शङ्खौ दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैव अभ्यहन्यन्त सह शब्दास्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदमतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं ददौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्।
घोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तूमूलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तथा वाक्यम् मिदं महामहीपते सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य तस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृनता पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरे कृष्ण। हरे तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धो नवासितान् कृपया परयावास्तु निषेधा इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां साजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। विभक्तश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं शंसते हस्तात् वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थितुं ब्रह्मतीवच्च मे मनः निमित्तन्निच्च पश्यामि विपरीतं केशव। हरे कृष्ण। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलाः शूश्वरा पौत्रा शाला सम्बन्धनिस्तताम् एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदना। माताजी म्यूटर अस्तु। माताजी म्यूटर अस। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यन्तिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्कराः। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते हि कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कलावती माताजी असं की उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः द्रात्रराष्ट्राणि हन्यो तन्मे क्षेमकरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आता एका अध्याय वाचिला पुरा धन्यवाद चंदकोन सांगलींची हांव एक परिचय दिता कोण पुराय वाचिलं म्हणून भक्तीन मीरा कामाक्षी माताजी विद्यापई माताजी बबीता माताजी महेश प्रभुजी अनीता कामत माताजी प्रशांत प्रभुजी सगुणा माताजी अश्विनी माताजी हेमा पै माताजी शोभना कामत माताजी मालती किणी माताजी श्यामला माताजी भक्तिन रीतु भक्तिन कीर्तना श्रीमती ममता शेणय माताजी रजनी माताजी शैला पै माताजी अश्विनी कामत माताजी विजया माताजी कलावती माताजी आणि रेखा माताजी सगळ्यांके धन्यवाद। आता दोन्ही अध्याय ओव्हर टू यू सत्यरूपा माताजी। दोन्ही अध्याय वज्जितले हर ग्रेस जननी देवी दासी हिस ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभुजी श्री वेंकटेश प्रभुजी हर ग्रेस मोह विमोह देवी दासी माताजी श्रीमती स्मिता शणै श्रीमती ज्योति शणै भक्तिन विधि भक्त वेद श्री नितिन प्रभुजी हेलो योगेश पै हेಳ श्रीमती रविकला पै श्रीमती हेमा शणै भक्ति नम्रता भक्तिन अनन्या श्री रितेश पाड़िगा श्रीमती नंदिता प्रभु श्रीमती ज्योति नायक भक्तिन आद्या नायक श्रीमती रम्या भक्त आरुष श्रीमती ज्योति किणी श्रीमती राधिका प्रभु भक्तिन नकशह शानबाग श्रीमती विजया शणै भक्तिन बोधिनी
श्रीमती प्रेरणा, श्रीमती सुजाता, श्रीमती गौतमी, श्री गणेश, श्रीमती रचना, श्रीमती जया शर्मा, भक्त अनंत प्रभु, श्रीमती हीरा कामत, श्रीमती पूजा प्रभु, भक्तिन साक्षी प्रभु, श्रीमती सुरेखा शानबाग। हरे कृष्णा. एक मिनिट. हरे कृष्णा. फर्स्ट चॅप्टर कोण कोण सांगून जाल्ले तांणी पुरो एक्झिट जाव का विनंती करता. इता म्हळ्यार सेकंड चॅप्टर थर्ड चॅप्टर जॉइन जावचे जाता ना. प्लीज तुम्ही युट्यूब लाईव्ह आसा तुम्ही युट्यूब वचून पळोवका फर्स्ट चॅप्टर आणि कोणी सेकंड 10th 12th चॅप्टर जॉइन जाल्ल्यांची 100 कॅपॅसिटी आसली निमित्त तुम्ही रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांक एक्झिट जाव का. थर्ड सेकंड आणि थर्ड चॅप्टर तांणी आसका आता. हरे कृष्णा. कंटिन्यू करीत. जननी माताजी तुम्ही असावा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण तंक जॉइन जावचे जायनी मळला कैपेसिटी फुल जलाल निमती. श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच. जननी माताजी वाज्याची. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमापार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिशोधन. हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकम् उच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्तुमो वशपत्नरत्थं राज्यं सुराणाम् अक्षाधिपत्यम्. संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनायोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं. श्रीभगवानुवाच अशोचाननशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरपराप्तिर्धीरस्तत्र नामुयति. मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यात् तं तितिक्षस्व भारत. यं हि नाव्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृत्वत्वाय कल्पते. नासतो विद्यते भावो
न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्ध्रुवं जन्म मृतास्य च तस्माद् अपरिहार्येते नातं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चाहेस्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वधर्मपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वामहारथाः येषं च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हेतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्ध्यो समा भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथास्तथास्ति निश्चला समाधाव अचल बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजाहाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्सरः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
अनम्यूट करा मत। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमांभसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमे यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। सुरेखा शानबाग माता जी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। वज्य माता जी। तने ऑनलाइन सर्च अनम्यूट करो। विहाय कामान् ह्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दोन्ही अध्याय वज्जिलेल्यांक मस्त ಧನ್ಯವಾದ। ಅತ್ತ ತಿನ್ನಿ ಅಧ್ಯಾಯ। हरे कृष्ण। चारी आणि पंचाध्याय कोऑर्डिनेटर लगी रिक्वेस्ट करता तांगेल ग्रुप आता निघाल का तनी चारी आणि पंचाध्यायाचे पूरे पार्टिसिपेंट्स आना जॉइन जाव का म्हणून। हरे कृष्ण। आता मी स्टार्ट करें। आजची तिन्ही अध्याय कर्मयोग सांगू कामगे लुटासची स्वाती पै गीता पै श्रीमती दीक्षा पै श्रद्धा पै सौम्या कामत श्रीमती लक्ष्मी पै नेहा पै मान्या प्रभु श्रीमती अपर्णा प्रभु आद्या प्रभु श्रीमती वनिता पै श्रीमती स्मिता पै स्तुति कामत श्रीमती सुदीष्णा कामत सिद्धार्थ पै नंदन नायक क्षितिज प्रभु श्रीमती कृपा प्रभु श्रीमती शैलजा मल्लिया श्रीमती वारिजा कामत श्री राजेश भट्ट प्रभु जी श्रीमती रश्मि भट्ट। हरे कृष्णा। स्वाति स्टार्ट करें मां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भः अन्यैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असात् स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो य कर्मणः शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यज्ञार्थकर्मोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञ प्रजाश्चस्त्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्वम् एषोऽशिष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्म भवोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षार समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यावं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तायति ययम् अघ्रेन्द्ररावो मोघं पार्थ स जीवति। एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैवश्च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनः कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदार्थव्यपाश्रयः। तस्मदासक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचार असतो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिं तथा जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् करतुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम व्रतानुवर्तन्ते मनुष्यपात सर्वशः उसी देयुरमे लोक न कुर्यं कर्म चेदहं संकरश्चेत कर्तास्याम् उपमन्यामि मा प्रजाम्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसता सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे सद्रसं चेष्टे स्वस्याः प्राकृते ज्ञानवानपि प्राकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। इन्द्रसेन्द्रियश्चार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छतौ कस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भवायवः। अर्जुनः उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। ಶೈಲಜಾ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅಸಚ್ವಾ ಶೈಲಜಾ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ तीसरा अध्याय 37 वर्स बोला तो ಮಾತಾಜಿ ಸಂಗೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ 37-38 ಸಂಗೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. माताजी तिने अनम्यूट केला. शैलजा मल्य माताजी अनम्यूट ಕೊಂಡು ಸಂಗೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ. श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वेनाम्यहरिण्यं धूमेनाव्यते वह्नि यतो दर्शो मलेन च यतोल्बेनामृतो गर्भास्तत तेनेदमामृतम्। हरे कृष्णा. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय घोरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते यत्येषा राजेश भट प्रभुजी तुम्ही सांगू येतं. राजेश भट प्रभुजी स्टार्ट करताच वा. रश्मी माताजी राजेश भट प्रभुजींनी सांग का तुम्ही सांग. हरे कृष्ण सांगता.
हेलो संगता हेलो वै प्रभुजी संगेज प्रभुजी हरे कृष्ण तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण। हे कृष्ण एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् श्री इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। म्यूटरस ओके हरे कृष्णा सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद। सक्कड जणांनी बारी चंदकोरनु श्लोक रिसाइट केलेले आशिल्ले मस्त अनंत अनंत धन्यवाद। आणि चेडवान एस्पेशली चेडवान बारी लायकून श्लोक रिसाइट केला चेडवांकय आणि तांगेल आनम्माकय अनंत अनंत धन्यवाद। आता 4 अध्याय विद्यापै हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अत 4 अध्यायो संगु यत्तसचि उदय नायक श्रीमती गीता नायक अदिति नायक अनिकेत किनी विद्या किनी श्रीमती शिल्पा हेगड़े प्रशांत हेगड़े श्रीमती गिरिजा राव श्रीमती शिल्पा शणै लक्ष्मीकांत शणै श्रीमती आशा हेगड़े श्रीमती कविता महंत नेहा पै श्रीमती स्नेहा पै श्रीमती सुधा शानुबाग हर्षिता भट्ट अभय श्रीनिवास किणी अर्चना श्रीमती अर्चना कामत अमोक कामत रवि किरण भट्ट। ओम परमात्मने नमः। चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनोर्वृक्षाक्रवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। सरेवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति धर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। एवं जात्वा कृता कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मातं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवये प्रत्यमोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। शिल्पा शणै। हरे कृष्ण। शिल्पा शणै। ओके। हरे कृष्ण शिल्पा। हाँ हरे कृष्ण विदेश। कर्मणो यपि बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञानदग्ध कर्माणां तमाहो पंडितं बुद्धः त्यक्त्वेककरापलासंगं नित्यतृप्त निराश्रयः कर्मानभिप्रवोतपि नैव किंचित्तं करोति सः। हरे कृष्ण। निराशीर्यच्च नित्यात्मा त्यक्तपर सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। तत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानान्वस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवेत् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। दैवमेव हरे यज्ञ योगिनः अदयुपासते ब्रह्मात्मनाव अपवे यज्ञेनैव हरे कृष्ण। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाज्ञो जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्ततो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यस्य संशितव्रत। हरे कृष्ण।
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। यज्ञश्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्मशनान्तनं नायं लोकोष्ट्य यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्णा। यतैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञान संभूतं ह्रस्तं जानसि नात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरि बोल हरि बोल। पूरा जन भारी चंदकोन सांगले तुमको पूरा जन धन्यवाद भारी चंदकोन सांगले तुम्ही पुरा थैंक यू तुम्ही तुमगे पुरा टाइम का अंग आई लंग। हरे कृष्ण। कृष्ण बरे करो तुमको पुरा जन के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल माताजी। विद्या माताजी तुम्ही टीमन बारी चंद कोरनो चारी अध्याय बारी चंद कोन पठन केलं सर। हरे कृष्ण। हा विनंती करता चारी अध्याय झालेले ना आता क्विट करेत पण नेक्स्ट 6th 7th पुरा येऊन जॉइन जाता ती। हरे कृष्ण। आता दंडोत प्रणाम करता हंगाशी सर्वांक आणि उद्दंड नमस्कार घालता आणि म्हाका सेव दिले नाका भगवत पुराण टीमाक भरती हांव आभारी आसा धन्यवाद सांगता। आज भारी चांग दिवस एकादशी त्या दिवशी गीता जयंती म्हळ्यार देवान अर्जुनाक उपदेश दिलेलो दिवस तशी जावन तितले पासून तुम्ही चारीचे अध्याय ऐकल आसा ती आम्ही पुरा संपूर्ण पठण करता आसता जी आता 5 अध्याय पठण करूक येता आसा ती आमगे साइड तुकून दीपा शेणई एक फर्स्ट एंड सेकंड
Ganesh Shene 3 and 4, Sita Lakshmi Kamath 5, 6, Mamta Shene 7, 8, Rashmi Naik 9, 10, Kalpana Rao 11, 12, Rajeshwari Rao 13, 14, Nirmala Prabhu 15 and 16, Jayashree Shene 17, Soumya Shene 18, Leela Pai 19, 20, Akshita Kishore 21, 22, Bhaktin Siya 23, 24, Shama Shene 25, 26, Radhika Balika 27, 28, Gayatri Kamath 29. Hare Krishna. Over to you, Deepa Mataji. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितं. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. ज्ञेयः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धाप्रमुच्यते. सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्ण. यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. हरे कृष्णा. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं तत्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. राजेश्वरी राव माताजी. हरे कृष्णा. पळेल तुमका आता कट्टल्मे इंटरनेट. ओके. सर्वकर्मा. हरे कृष्णा. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. हरे कृष्णा.
नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। You are on mute, Mataji. Hare Krishna. Mute dala. Mataji. नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज ज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयशदात्मान तर्हि सत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषः। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रश्यत्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मणि बाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। Vivo 1611 mute अर्धवरा please. तुम्ही audio on असा. राधिका बाळिगा माताजी आता सिंग आता चांट करा. माताजी तुम्ही म्यूट असती. राधिका बाळिगा माताजी. माताजी अनिका म्यूट असत तुम्ही. राधिका बाळिगा माताजी अनम्यूट करा. हरे कृष्णा। स्पर्शान् प्रस्थापयित्वाहं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानं समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मोक्षपरायणः विगते चावयः क्रोधो यः सदा मुक्तदेव सः। हरे कृष्ण। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि बोल सकणानी भारी चंद कोरनु प्रॅक्टिस कोरनु भक्तेरी श्रद्धेरी पंच अध्याय सांगिलास सकणांक अनंत धन्यवाद करता हांव. आणि एक मेसेज पेटयलें तुम्ही सर्वांनी एक मेसेज तुम्ही देवाले आराधन करूक अंगवट जल्नस परती हांव आभारी आस तुमका. हरे कृष्णा. रेणुका माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. थँक यू मंदाकिनी माताजी. 4th चॅप्टर कंप्लीट केल्याक आता 6th चॅप्टर सांगच्याक कोंकणी बांधव येते. सो हे लिस्ट टाइम डिफरन्स असले ती थोड लोकांक जॉईन जावचे आते ना कॅनडाच्या हांगच्यान. सो हांव लिस्ट सांगता आणि हांव सांगल नंतर सगळे बांधवांक रिक्वेस्ट तांगेलो ऑडिओ आणि व्हिडिओ ऑन करना तांगेल टर्न प्रकार सांगा. सो आज 6 चॅप्टर सांगच्या किती असत. रसमई माधवी देवीदासी श्लोका 1-1-2, श्री पुष्पाराव श्लोका 3-4, श्रीमती मीरा माडगेरी श्लोका 5-6, श्रीमती रेणुका प्रभु 7-8, श्रीमती साधना शानभाग 9-10, भक्त आर्यन 11-12, दीपक नायक 13-14, श्रीमती सीमाराव 15-16, श्री दिनेश बालगी 17-18, दिलीप वाकड़े 19-20, सविता वाकड़े 21-22, श्री गुरुदत्त प्रभु 23-24, श्रीमती नीता प्रभु 25-26, रोहन 27-28, श्रीमती अनीता कामत 29-30, श्री मंजुनाथ कामत 31-32, भक्त विवान माडगेरी 33-34, श्रीमती कुसुम प्रभु 35-36, श्रीमती शोभा कामत 37-38, श्री कामत 30-40, श्री मोहन प्रभु 41-42, श्रीमती राधा शानभाग 43-44, श्रीमती 46-45-46 and Radhakrishna 47. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति योगं तं विद्धि पाण्डव. न्याह सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. कृष्णा पुष्पराव अनम्यूट करा असं. हरे कृष्णा. आरुरोक्षोमयोगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्मै कारणमुच्यते. श्लोक 4. यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्म संसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्य दोच्यते. हरे कृष्णा. मीरा मडगेरी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उद्धारेतात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्. आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव विपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तुतेत्मात्मशत्रुवत्. हरे कृष्णा. रेणुका प्रभु माताजी. जिदात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इच्छिते योगी समलोष्टशम
कांचन साधना शानभाग। हरे कृष्णा। कृष्ण शूरनिष्ठारुदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा आर्यन। हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनां नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्जद् योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। दीपक नायक। हरे कृष्णा। समं कायाशिरो ग्रीवं धारायन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयान् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्णा। सीमा राव। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्णा। दिनेश बालगी। हरे कृष्णा। दिनेश बालगी। I will say युक्तहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मनेय वितिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तविच्युते तदा। श्री दिलीप वाकडे। हरे कृष्णा। यत हवा म्हणता यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। I think सविता वाकडे ना शिस्त रश्मी सांगता। सविता असा सविता म्यूट आसा। हरे कृष्ण माताजी। सविता माताजी। सविता माताजी म्यूट। हरे कृष्ण सविता माताजी अनम्यूट करायची। सुखम आत्यंतिकं यथा बुद्धि गृह्णन्ति इंद्रियं येति यत्र वेति यत्र न जायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन नाति विचलयते। ओम हरे कृष्ण। गुरुदत्त प्रभु। हरे कृष्णा। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संहितां स निश्चयेन योग कर्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावन कामं त्यक्त्य सर्वम् अचेतसा मनवस्येन्द्रियग्रामं विनियम्य संशयता। हरे कृष्ण। शनै शनैरुपरमेधा बुद्धाद्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनं कृत्वा न किञ्चिदस्मयेत् यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेत। हरे कृष्ण ममतका।
27, 28. Sound asa. Hare Krishna Mamataka. Unmute करका, unmute करका, unmute करका. Mute असा. सांग ममता. हरे कृष्णा ममता का म्यूट असा. आणि म्यूट झालाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ सांग. प्रशांत मनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनीता. हरे कृष्ण. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमौनोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा युधि वा दुःखं स योगी परमो मोतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण भगवान. योऽयं योगत्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितं स्थिरं चञ्चलं हि मनं कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुसुम माता जी. हरे कृष्णा कुसुम माता जी. 35, 36. हरे कृष्ण कुसुम माता जी. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. हरे कृष्ण शोभा माता जी. कामत. हरे कृष्णा शोभा कामत. असत में माता जी तुम्ही. सॉरी. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतं ग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. विश्वनाथ कामत. हरे कृष्ण. I have to tell. How Sankat? How Sankat? Arjuna Vacha Ayati Shadyopeto Yoga Chalita Manasah Aprapya Yoga Samsiddhi Kama Gatim Krishna Gacchati Kachinnobhya Vibrastas Chinna Brahma Ivanashti Apratishto Mahabaho Vimuddho Brahmana Pati. Hare Krishna. हरे कृष्ण. विश्वनाथ कामत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः वदन्यः संशयास्य चेत्तान युपपद्यते. श्री भगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते
न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोहन प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी असत तुम्ही मोहन प्रभु। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अशित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतदि दुर्लभतरं लोके जन्म यदिष्टृशम्। हरे कृष्ण। राधा मम्मी। त्रतं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वते ततो भूयं सिद्धो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गीता माडगेरी। हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्णा। प्रयत्नादयत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्तु याति पराम गतिम। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्मद्योगी भवार्जुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रोहन। हरे कृष्णा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तातमो मता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। कृष्ण। सगळे बांधवांक अनेक अनेक धन्यवाद। अति सुंदर जेवण सांगल्याक आणि भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाक बी अति अनेक अनेक धन्यवाद। 350 कोंकणी बांधवांक भट केल्याक। सो नेक्स्ट आई थिंक राधा भाऊ माताजी, ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खूप खूप धन्यवाद राधा कृष्ण रसानवर प्रभुजी आणि माताजी। हरी बोल। आता मी सप्तम अध्याय सुरू करते। माताजी तुमगेला आवाज ऐकिते ना माताजी, मस्त लो असा। अच्छा, आता एक पड प्रभुजी। कोण माताजी? आता एक पडता ऐक पडता बेटर माताजी, बेगेन बेटर आणि बेगेन। ओके ओके ओके। अच्छा, रिसाइटर्स शेषाची आर्य श्री बाळिगा फर्स्ट आणि सेकंड श्लोक, सेकंड राजश्री माताजी थर्ड आणि फोर्थ श्लोकाक, ತಂಗಿಲೇಚಿ ಬಾಮುಣು 5th आणि 6th श्लोक, श्रीमती पद्मा कामत माताजी 7th 8th श्लोक आणि तांगेल पूत श्रीनिवास कामत 9th आणि 10th श्लोकास. हर ग्रेस व्रजगोपी माताजी 11th 12th श्लोका सांगतलीची. हिस ग्रेस विश्वांबर दास प्रभुजी आणि 13th 14th श्लोका आणि 15th 16th श्लोका श्री सुधींद्र आचार्य प्रभुजी, 17th 18th श्लोका दिव्यश्री माताजी आणि 1920 गीता आचार्य माताजी आणि 21-22 गौरी भट माताजी, 23rd 24th विक्रम प्रभुजी आणि 25th 26th आवा, 27 28 गोपीनाथ आणि 29 30 भक्त देवामृत सांगतले. आमकां अवकाश दिलेल्या खूप खूप धन्यवाद माताजी. अजूनही तुमगेला आवाज मस्त सान येते सा माताजी, थोडं लागी येऊन सांगता मोस्टली. ओके प्रभुजी, नो प्रॉब्लेम. सो आर्यश्री बाळिगा तुम्ही सुरू करूयात. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां
कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेया नित्रस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां देव जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। मत्त परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेव्य परम् अव्ययम् दैवी हेष गुणमयी मम माया दुर्यत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहरिता ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानमाम्यं न मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैतथा ज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मयेव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तां व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय
परम भावम अजानन्तो मामाव्यम अनुतं मम। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चकिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सक्कड पार्टिसिपेंट रिसाइटर्स हांकां खूप खूप धन्यवाद, हृदयपूर्वक धन्यवाद। आणि ह्या सप्तमोध्याय जाल्लेलो आसा। ओवर टू यू शाश्वती गंधर्विका माताजी। हरी बोल। हरे कृष्णा सकडांकय आता 8 अध्याय वाजितले अशें आसाची। श्रीमती स्नेहा पै 1-2, भक्तिन सान्वी पै 3 and 4, श्रीमती रूपाली पै 5 and 6, भक्त समर्थ नायक 7 and 8, भक्तिन उन्नति भट्ट 9-10, भक्तिन पावनी भट्ट 11-12, श्रीमती दीपा भट्ट 13-14, श्रीमती माया 15-16, श्रीमती पद्मा भट्ट 17-18, भक्तिन श्रद्धा कामत 19-20, श्रीमती कांति कामत 21-22, श्रीमती रेखा शानबाग 23-24, भक्तिन अशिता शानबाग 25-26, भक्तिन अनुषा शानबाग 27-28। स्टार्ट करी सन स्नेहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथा प्रोक्ता देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मीति हतात्मभिः। श्रीभगवान् उवाच अक्षर परब्रह्म परं भवाद्बोध्यायमुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संयदितः अधिभूतक्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवार्थ देहमृताम्बरम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अन्तकाले अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् स
ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। माया माताजी मामुपेत्य ऐकतच माताजी. पण माया माया नाही ऐकूया. नाही. ओके. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. म्यूट अरस पद्मा भट माताजी, म्यूट अरसजी. पद्मा भट माताजी म्यूट अरस अनम्यूट करें. हाँ. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्युद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागमे पलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके. हरे कृष्ण. भूताग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमेव सह पार्था प्रभावत्याः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्ता सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति. हरे कृष्ण. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ता तम् आहुः परमं गतिं यं प्राप्तेन निवर्तन्ते तद्धार्था भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं तथा. यत्र कलेत्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. शुक्लकृष्णे गतिर्हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः. नैते श्रुति पार्थ जनां योगी मुह्यते कश्चन तस्मत् सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भवार्जुनः. वेदेषु यज्ञेषु तपश्चु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्यति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगिः परं स्थानम् उपैति चाढ्यम्. ॐ तत्सविते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हृत्पूर्वक धन्यवाद. 8 चॅप्टर वाजिलेले आहेत पुरे जनाक. आता मी 9वा चॅप्टर स्टार्ट करूया. तू कोण पुरा वाजिच्या येतस म्हणून सांगून पळया. भक्त विभू पै 1 and 2, भक्त विष्णु पै 3, 4, भक्त शिवांश नायक 5, 6, श्रीमती शुभा 7, 8, भक्त दैविक किणी 9, 10, भक्त दीपक किणी 11, 12, श्रीमती स्मिता किणी 13, 14, श्रीमती अक्षता नायक 15, 16, भक्त चिन्मय किणी 17, 18, श्रीमती शोभा किणी 19, 20, श्रीमती कांचना 21, 22, श्रीमती प्रेरणा भट्ट 23, 24, भक्ति अपूर्वा भट्ट 25, 26, श्रीमती श्वेता प्रभु 27, 28, श्री विकास कामत 29, 30, भक्तीन समिता नायक 31, 32 आणि हाम 33, 34. एक्सक्यूज मी माताजी. हा सांग दीपक. माताजी दैविक आणि लम्मा अटेंड करताना सकाळची हाव 9 to 14 या सांगचोय श्लोका. हा जय जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्य योगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. शिवांश नायक. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. दीपक. दीपक. न चा मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्. हेतु नानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं. परं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम्. मोगासमोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसा. राक्षसीम् असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता. भजन्त्यानन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्.
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अक्षता ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहम् इवज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं श्रुत प्रभवं प्रलयं स्थानं निदानं बीजमव्यहम् तपाम्यहमहं वर्षां निगृह्णान्मुत्सजामि च अमृतं च मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनां त्रैविद्यां सोमपापूतपाप यज्ञेरिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। कांचना माताजी ऐकत हरे कृष्ण सांगायची तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपूर्व आणि प्रेरणा माताजी ते पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भक्तं च प्रभुरेव च नाम तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते यान्ति देववृता देवन् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्या जिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रयत्तामि अस्नामि प्रयत्नमाम्। हरे कृष्ण माताजी। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्वा मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्
मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्परायण। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अध्याय 8 आणि 9 वाजिलेले सगळ्यांकय आणि ऐकलेले सगळ्यांकय भागवत पुराण टीम कोंकणी हांकय पूरे जनाकय हृत्पूर्वक धन्यवाद. हरे कृष्णा. अथ अध्याय 10. ऐकताना म्यूटर असाची. स्टार्ट करता. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ दशमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय न मे विदुः सुरगुणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणाम् इव सर्वशः. हरे कृष्ण. यो मामजमनादिं च वेत्तिं लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमत्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः महर्षा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजाः. हरे कृष्ण. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मच्चिता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामेषानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशायम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेय भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमभवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. हरे कृष्ण. ऐकताना कसं नाही.
किरण कृष्ण पडियार नांचवा माताजी कुर्तो आव हरे कृष्ण ऐकतात ना. हरे कृष्ण हा आता ऐकतच हरे कृष्ण आहुस्त्वामृषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि. हरे कृष्ण लता माताजी स्वांगा लता माताजी म्हणा ना ओके कथं विद्यामहं योगीं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. नेक्स्ट सची पै. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च. हरे कृष्ण. आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. सुमा शेणोय माताजी तुम्ही सवे सुमा शेणोय. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षराक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्. माताजी नेटवर्क स्लो सदा म्हणता पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागरः. 25th श्लोक संध्या ईश्वर माता. हरे कृष्ण. महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं
धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। अनन्तसाच्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादसाच्मि दैत्यानां कालाकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं वृषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मा विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहं। हरे कृष्ण। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। हरे कृष्ण। बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोत्स्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्टीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो मदमयतामस्मि नेतिरस्मि जिगीप्सताम् मौनं जैवास्मि ध्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहं। हरे कृष्ण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं न तदस्ति विनायस्य मया भूतजन्मान्तरम् अन्तोऽस्मि मम देहानां विभूतिः परन्तपः एष सः प्रोक्तो विभूतिः मया। यद्यस्ति तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय। हरे कृष्ण। सगळ्याके धन्यवाद बारी चंद जन्मला सगळ्यांनी सगळं स्पीकर साके अंगे एक जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोड्यूस करता। फर्स्ट तीन ऋतिका कम्मत, श्रीमती विजया कम्मत, राधिका नायक माताजी, सुमाकिनी माताजी, विश्वनाथ किनी प्रभु, श्रीमती लक्ष्मी, अमृता पडियार, लता माताजी, सच्ची पै, श्वेता पै, सुमा शेणॉय, संध्या ईश्वर माताजी, सुधा प्रभु, दीपाली कम्मत, शोभा शेणॉय, दिव्या कम्मत, दीप्ति शेणॉय, निर्मला शेणॉय, सृष्टि पै, कुमुदिनी माताजी आणि सगळ्याके मी भारी धन्यवाद। तुम्ही आम्ही प्लॅन कोण तिने तुम्ही इकडे इनी करेक्ट टाइम मारी सगळं जाण छान जाण धन्यवाद देवा देना आणि आमका 11th चॅप्टर आमका प्रोसीड करूया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಧವರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಧವರ ಓಕೆ हरे कृष्ण। 11th chapter होची
Reciter of Sri Sankat Asturveka. Aman Kamath first and second shloka. Kartik Kamath third and fourth. Bhaktin Vaishnavi Kamath 5, 6. Srimati Gauri Kamath 7 and 8. Bhaktin Kamath 11 and 12. Rekha Kamath 13 and 14. Bhaktin Shreya Kamath 15 and 16. Srimati Rekha Balgi 17, 18 shloka. Srimati Nita Shanbag 19, 20 shloka. Srimati Pratima Nayak 21, 22. Srimati Purnima Kamath 23, 24. Bhaktin Revati Bhatt 25, 26. Srimati Gayatri Nayak 27, 28. Srimati Meena Nayak 29, 30. Srimati Suma 31, 32. Srimati Aruna Pai 33, 34. Srimati Deksha 35, 36. Srimati Kanchana Kamath 37, 38. Srimati Radhika Bhatt 39, 40. Srimati Shashikala 41, 42. Srimati Suchitra 43, 44. Srimati Veena Kamath 45 to 48 Samta Sachi. Srimati Usha Pai 49, 50. Shri Suyash Kamath 51, 52. Bhakt Nandan Kamath 53, 54. Srimati Swati Kamath hava 55 shloka, 55th. अब अमन कामत स्टार्ट करता सा. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्यामपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पत्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्या वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनद्या द्रष्टपूर्वाणि पत्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योग्यमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदर्शि सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण.
तत्रैकस्तं जगत् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वानुरांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्नेत्रं पश्य सर्वतो न रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। प्रतिमा नायक श्रीमती प्रतिमा नायक नेक्स्ट। ओके प्रतिमा माताजी Yes. असं आहे तुम्ही हॅलो प्रतिमा माताजी असं आहे। हरे कृष्ण। हाँ सांगू प्रभु अमिहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। नेक्स्ट पूर्णिमा माताजी। हाँ रेडी स्टार्ट करा पूर्णिमा। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूप बाहुर्पादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं द्रष्टां लोका प्रव्यथितास्तताहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदामि क्षमं च विष्णो। द्रष्टाकराणि च ते मुखानि द्रष्टेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वादतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे ससैवा निपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथास्तौ सहानिधियैरुपि युद्धमुख्यैः रमाणा विशन्ति दंशाकरानि भयनाकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते यथा नदीनां बहुबवेगा समुद्रमेव विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि लवणोकमीरा विशन्ति वक्ष्याण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा वेलीह्यसे ग्रासमानः समन्ता लोका समग्रा ध्वजनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोघ्रा प्रततन्ति विष्णो। थैंक यू माताजी। सुमा माताजी नेक्स्ट। अख्याहि मेघो भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् संहारतुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यानिकेषु योधः। शोलभस्व चित्वा शत्रुं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् मया हतास्तं जहिमा यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्ववचनं केशवास्य कृताञ्जलिर्वेपमना कीर्ति नमस्कृत्य भूया एव कृष्णां सगद्गदां भीतभीतप्रणम्याम्। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष अनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंग। हरे कृष्ण। थैंक यू। कंचना कामत। नेक्स्ट कंचना कामत। कंचना माता जी सब है। हरे कृष्णा। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परमं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। नेक्स्ट राधिका भट्ट।
वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्युचित तत्समक्षं तत्काक्षमये त्वामहमाप्रमेयम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया रसिदेव सोढुम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। श्री भगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदेन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञार्दनेन दानै न च क्रियार्भिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नलोके द्रष्टुं तदैन्य न कुरु प्रवीरा। जय श्री कृष्ण। मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रङ्गममीदं व्यपेत प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपम् आश्वासयामीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सुयश कामत नेक्स्ट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मतपराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं
समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेष्टितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यास ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनापेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मनपमन्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गः विवर्जितः। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतद्धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। बारी छंद दुकान सांगले चेडवांनी सगळ्यांनी संगीता माताजी तुम्ही बरे भक्ती योगाचे श्लोक सांगिल्ले सकट चेडवांक आणि तशी संगीता माताजी तुम सगळ्यांक धन्यवाद। आता कंप्लीट झालं ना? ओके आता नेक्स्ट चॅप्टर 13 ओचा चॅप्टर 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोका सांगच्याक येता आसाची नाव सांगता सगळ्याले। प्रार्थना डी प्रभु, डॉक्टर अपर्णा डी प्रभु, परिमला जे प्रभु, परम कामत, भारती प्रभु, औरव प्रभु, प्रतीक्षा भट्ट, श्री दीपक शणै, श्रीमती शशिरेखा भट्ट, श्रीमती नीलिमा शणै, सिद्धांत शणै, पूर्णिमा शणै, हर ग्रेस पूर्ण प्रेममयी दीदी, हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंदा दास, हिज ग्रेस संत गोपेश्वर दास, त्रिशा जाधव आणि गौरी रामदास भट्ट। तुम सगळे रेडी असा नवे स्टार्ट करता। फर्स्ट श्लोक प्रार्थना डी प्रभु।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ये तद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते ये तद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रप्रदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतानहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाधृतम्। अमानित्वमदम्बित्वमहिंसा क्षार्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथाः ज्ञेयं यत् प्रक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नुते अनतिमत्परं ब्रह्म सदुयते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत परब्रह्म न सत्तत् सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वामृत्य तिष्ठति। हरे कृष्णा। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतानां भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः
मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत् योनिजन्मसु। सिद्धांत अस्व सिद्धांत शणै सिद्धांत शणै पूर्णिमा शणै ನಂತಿವೆ सिद्धांत शणै पूर्णिमा शणै त्यांना कंटिन्यू करून दोन्ही उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। पूर्ण प्रेममयी माताजी। यावत् रञ्जयते किञ्चेत् सत्त्वं स्थावरजङ्गमा क्षेत्रक्षेत्राग्निसंयोगात् तद्विधि भरतर्षभा समां सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यान्तं य पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथक् भावं यथस्थम् अनुपश्यति तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सक्षम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वसति तो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकमिमां रविः क्षेत्रं क्षेत्रहि तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमे मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योगेनां
त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ. ಚಾಪ್ಟರ್ 13 आणि तशी ಚಾಪ್ಟರ್ 12 दोन्ही सांगील सकट जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. नेक्स्ट माया माताजी चैप्टर 14. ओवर टू यू. थँक्स अपर्णा माताजी. हरे कृष्णा. आता 14 अध्याय घेऊया. त्या 14 अध्याय म्हणतली नाव सांगता. 1-2 दीपा भट माताजी, 3 and 4 भक्तिन धन्विता प्रभु, 5-6 स्फूर्ति पै माताजी, 7-8 भक्त शाश्वत पै, 9-10 आशालता प्रभु माताजी, 11-12 लक्ष्मी मल्ल्या माताजी, 13-14 भक्त वेदांत नायक, 15-16 भक्तिन वैभवी नायक, 17-18 नमिता नायक माताजी, 19-20 रश्मि कुड़वा माताजी, 21-22 लोकेशने प्रभुजी, 23-24 विघ्नेशान बाग प्रभुजी, 25-26 प्रेम जंगम प्रभुजी, 27 स्तुति मल्ल्या. ओवर टू यू दीपा भट माताजी. स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः. सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. हरे कृष्ण. धन्विता. धन्विता. धन्विता बाबू असले तू लॉग इन केलेलं पळायला हवं. असले धन्विता. वॉइस कनेक्ट जायनी. ಮಾಯಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ವಿತಾ. बरं. ओके. आता म्हणता जिणायला तिक एक चान्स दिव्या वापस सांग बाबू. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निर्द्राभिः तन्निबध्नाति भारत. वरून आईला मग सांग ना. चॅप्टर 17 रिमांडीला आईला सांग. आता प्रेमगल सिरियल पहिलं. आशालता माताजी. तत्त्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः
प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। लक्ष्मी मल्ल्या माताजी। सारी माताजी। सर्वदारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्य दिव्यग्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्माणामशमस्पृहा रजश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतश्व। हरे कृष्ण। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ततः प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानां तमसः फलं। हरे कृष्ण। सत्त्वान् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यो गुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा न पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भागं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। विघ्नेश प्रभु जी। विघ्नेश प्रभु जी। विघ्नेश शानबाग। ना दिसता ना कळय नाही आता। हरे कृष्णा। विघ्नेश शानबाग प्रभुजी असावे तुम्ही। उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। प्रेम प्रभु जी।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्मणावपरे यज्ञं यज्ञेन प्रजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीनिन्द्रियविषयान्यन्ये इन्द्रियाणु जुहति। हरे कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सगळ्यांनी भारी छंद फोन म्हणलाय. सगळ्यांके अनंत अनंत धन्यवाद. सगळ्यांनी आम्ही कृष्णाले प्रत्येकाचे पात्र जाऊया. कृष्णार्पण. नेक्स्ट अध्याय. ओवर टू प्रवीण प्रभूजी. हरे कृष्णा. सगळ्यांक स्वागत आजी. गीता जयंती स्पेशल भगवद्गीता रिसायटेशन आका 15वे अध्यायाचे रिसायटर्स लिस्ट अशी आसा. सौम्या प्रभू श्लोका 1 and 2, श्रीमती दिव्या देसाई 3 and 4, हांव 5 and 10, श्रीमती जयंती प्रभू 6 and 7, श्रीमती स्वाति प्रभू 8 and 9, डॉक्टर विठल दास कामत 11 and 12, भक्त नमन कुडवा 13 and 14, भक्तिन निकिता कुडवा 15 and 16, श्री सुधीर शणै 17 and 18 आणि भक्तिन अपूर्वा प्रभू 19 and 20. स्टार्ट करूया आम्ही. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः. पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालाः. अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबध्नीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्त्वरिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्यान् विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वे विमुक्ताः सुख दुःख सम्नेहि गच्छन्त्य मूढाः पदम् अव्ययम् तत्. म्यूटर आसा तुम्ही. ऐकत आहे. स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. न तद्भासयते सूर्यो न शांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. शरीरं यदवाप्नोति यच्च पुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं
उपसेवते। हरे कृष्ण। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्ये चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। गामायिष्ये च भूतानि धारयामि मोदसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मको वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देयमाश्रित गुणोत्तमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ध्यानावसानं च वेदैश्च सर्वैरहमेवेद्यो प्रेराग्रकृतवेदविदेहताम् द्वाविमो पुरुषो लोके सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेतु दारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यय ईश्वरः यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम अथ पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 15 अध्याय संगील ಒಟ್ಟು ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಅಕ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮುಖಾರ 16th ಚಾಪ್ಟರ್ में स्टार्ट ओवर टू आता अध्याय 16 अध्याय 16 वजु चैतल हरग्रेस माधव लीला देवीदासी भक्तिन वृंदा पै भक्तिन अश्विनी पै भक्त प्रसाद देशपांडे भक्तिन अनगा पै श्री अजित पै श्रीमती आज्ञा पै भक्तिन तेजस्विनी पै श्री रामदास शानबाग भक्तिन सुमेधा शानबाग श्री सिद्धांत प्रभु हल्दीपुर आणि हिज ग्रेस माधव चरण दास शूर करेत.
माधवलीला माताजी असं आहे. हरे कृष्णा. माधवलीला माताजी असं आहे. माताजी फर्स्ट 3 नाचवा. फर्स्ट 2 नाथ की मन. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि हरे कृष्ण माताजी. ज्ञानयोग आयलेंचवा. आता जॉईन करता का त्यांनी? हाँ हाँ ओके ओके. हरे कृष्ण. फर्स्ट श्लोक कंटिन्यू करा माताजी. अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. हरे कृष्ण. शाश्वती माताजी कंटिन्यू करा. त्यांनी जॉईन जाताना राबायला त्यांनी कंटिन्यू करतले. अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम्. दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्. तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानविजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. प्रवीण प्रभु. हरे कृष्ण. गोभूत स्वर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च. दैवो विस्तर संप्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. प्रसाद देशपांडे तन्नी ऑडियो कनेक्ट जायनिची. त्यांनी म्यूट आताशिली की पडो. माधवचरण प्रभुल नाव वरशिली वा. प्रसाद देशपांडे. हरे कृष्ण. म्यूट ಅಂತ माधवचरण प्रभु. प्रसाद देशपांडे तै दकून वाजिलवा. हा हा आता ही वृंद म्हणता आता लॉग इन जायत नाशिले. ओके. किणी माम तैजल्ला श्लोकासा. हा हा वृंदाक म्हणत असते की श्लोक म्हणताले की नंतर कंटिन्यू कर. तेजं क्षमा धृति शौचं द्रौहो नातिमानिता. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत.
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हरे कृष्ण। प्रसाद देशपांडे. 7, 8, 9, 10. 9, 10. अनघा. ते अनघाला फोन. अनघा अवेलेबल नाम आहे. अनघा नाव आहे ऑनलाईन. आज्ञा. हाँ आसा हा सांग सांग. हरे कृष्ण एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रामान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हरे कृष्ण माधव चरण प्रभु. फर्स्ट 5 जल मात्रा. हा 6th आणि 7th जय. 7, 8 दिले. 8 परत परत करता. 6 to 7. 6 to 7 कोणाला पण 6 दो हरे कृष्णा दौभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तर संप्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणुम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. 7th आणि 8th ने आता प्रसाद देशपांडे. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुर न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्. हरे कृष्ण. 9, 10 तक. 9 अनघा. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवृत्तन्ते शुचिव्रताः. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्ध कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनाथ सञ्चयान्. हरे कृष्णा कृष्ण. हरे कृष्ण इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुरनिश्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. कृष्णार्पणमस्तु. तेजस्विनी. हरे कृष्ण अर्थोय बीजनवानस्मि पौनस्ति सदृश्य मया यस्य सदास्मि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृतः असक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. रामदास.
आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो सूयकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुमेधा शानबाग 1920 तान अहं विशतत् क्रूरः संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभाम् आसुरीक्षेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय तथो यत्यधनागतिम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिद्धांत प्रभु। हरे कृष्णा सिद्धांत प्रभु स्वयं। सिद्धांत हरि बोल। सिद्धांत प्रभु। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानेक्तं नोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। धन्यवाद माधव शरण प्रभू। हरे कृष्ण। आता मी 17 अध्याय म्हणू का बार सरतासची शाश्वती माताजी। सत्र अध्याय म्हणू के तसची अर्चना बालिगा 1 आणि 2, आशा पै 3rd and 4th, ज्योति पै 5th 6th, विद्या पांगल 7th and 8th, शांता भट्ट 9 and 10, विनया पै 11 आणि 12, रूपा कामत 13 आणि 14, मेघना 15 16, वरुण 17 and 18, पूर्णिमा नायक 19 20, प्रहलाद नायक 21 and 22, वीणा पडियार 23 and 24, माया कामत 25 26, भक्त तक्ष 27 आणि आवा 28 सांगता। हरे कृष्णा। अर्चना। अथ श्रद्धात्रय विभाग योग नामः 17 अर्जुन उवाच ये शास्त्रं विधिमुत्सृज्य
यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् अहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सह स्वभावजः सात्विकी रजसी चैव तमसी चेति तां शृणु। अम्मा आणि ज्योतिन मोन्यत अम्मा सत्त्वं रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव च यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजस प्रेतानूतगणंश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः शास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते तपोजना दग्धहंकारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः करिष्यान्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मम चैवन्त शरीरस्थं तन्विद्य असुरनिश्चयम्। विद्या अहरसत्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तापस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु अयः सत्त्वा बलरोग्य सुखा प्रीति विवर्धनः प्रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विका प्रियाः शान्ताकत्वं कृष्ण शांत म्हणतली आणि हरे कृष्ण विद्या शांत म्हणतलींचे शांता भट प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण म्यूट आरा सच माताजी। शांता भट माताजी प्लीज अनम्यूट करायची आणि म्हणायची कात्वं लालवण्यातुष्णा तीक्ष्णा रुक्षा विदाहिना आहार राजसस्येष्टा दुःखः शोकमया प्रदा यतायामं गतरसं ऊती पर्युषितं चयेत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विनायका फलांकाक्षिबेर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यस्त्यव्यम् एवेति मना समाधाय च सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं डम्बार्थम् अपि चैवयेत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमाचवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। मेघना हरे कृष्ण। अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यान्यसनं चैव वनमान्यतप उच्यते मनःप्रसाद संयुक्तं मौनम् आत्मविनिग्रह भावा समृद्धिर् इत्येतत् तपो मनसम उच्यते। हरे कृष्ण। श्रद्धाया बुरया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अपकाञ्चीभिर्युक्तये सात्विकं पंचक्तये सत्कारामन पूर्जाता तपोदम्भिना चैव यत् क्रियते तदीय प्रोक्तं राजसं कलम् आध्रुवम्।
पूर्णिमा मूढग्रहेणात्मानो यत्पीडया कृपते मूढग्रहेणात्मानो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदारतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम्। हरे कृष्ण। विनक ओम तत्सिद्धि निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादुदारत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। तद् अनाभिसन्ध्याय फलं यज्ञातपक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चब्दा पार्थ युज्यते। हरे कृष्ण। यन्ने तपसि दाने च स्थितिः सद् इति उच्यते कर्म चैव तदार्थीयं सद् इति एव विद्यते अश्रद्धाया उतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सविदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 17 अध्यायांतु भाग घेतील सकट जनाक धन्यवाद। हरे कृष्ण। गीता महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आता 18th चॅप्टर स्टार्ट करूया आम्ही। हांव नाव वाजून सांगता तांकां एल्टरनेट्स सांगाची। कृष्ण किरण कृष्ण पडियार, काव्या केणी, सुजाता केणी, विंध्या पै, अक्षता कामत, पवित्रा कामत, आशा प्रभु, अनुपमा शणे, अन्विता शणे, अनुराधा शणे, श्रीलता शणे, कामाक्षी कामत, गायत्री कामत, मानसा कामत, वत्सला शर्मा, सुनीता शणे, वनिता शणे, श्वेता शणे, भारती प्रभु, आशा पै, मीनाक्षी कामत, श्रद्धा कामत, ममता सुंदराम प्रभु, अनन्या प्रभु, वंदना शणे, सुगुणा किणी, शोभा पै, वसंती पै, लता आनंद, सुमेधा पै, श्रीनिधि पै, कस्तूरी प्रभु, लीलावती हेगड़े, ज्योति पै, पूर्णिमा राव, शकुंतला शणे, उषा पै, विद्या हेगड़े, वनिता किणी। सो आम्ही स्टार्ट करूया ना। किरण कृष्ण पडियार तुम्ही स्टार्ट करयाची। हरे कृष्ण माताजी। ऐकू पडतो माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः अष्टदशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदना। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं
संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषा व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। हरे कृष्ण। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहस्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः दुःखं मित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। अक्षता कामत। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यात्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य नाहो कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा व्रजनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेनेतु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतस्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतात्पातवदल्पं च तत्तामसमुदाव्रतम्। हरे कृष्ण। नियतं संगरहितं
अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुनात् कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुनात् कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैकृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं रतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण प्रतत्तेनोऽग्निर्भया प्रवृत्तिं च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थक सात्विकी। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। वनिता शेणे। हरे कृष्ण. अन्विता म्यूट आरस की म्हणून अन्विता म्हणाल एक नाव असेल. धृत्यायया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेऽधृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोऽप्यहम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् इन्द्रियसंयोगा यत्यदग्रे मृतोऽप्यहम्। यत्यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोऽप्यहम्
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे व्रतोपमम् परिणामे विषमिवा तत्सुखं सार्ध संस्कृतम्। हरे कृष्णा 39 कोण कंटिन्यू कराची। थर्टी 39-40 कोण श्लोक कंटिन्यू करा प्लीज। हरे कृष्णा। किरण पडियार प्रभु जी तुमगे लिस्ट कौन 39-40 माताजी लिस्ट ना माताजी आ म्हणतो बनाले हाँ मनाच नाच नव्हता नी पक्का ना यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम् उदाहृतम् न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्ण 41 and 42। हरे कृष्णा। ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविवक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणा यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यस्यति सिद्धिं विन्दति मानवः। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वो धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत् सर्वारम्भ हि दोषेण कर्मेणाग्निरिवावृता। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्णा कंटिन्यू करा 51-52। हरे कृष्णा 51-52 कौन नाच वेतनी हरे कृष्णा प्लीज कंटिन्यू करा। सगुणक्का
Mute us back. तो सगुणा है त्यांनी. ओके. वय सगुणा किणी. नाम त्यांनी. किरण पडियार प्रभु जी. जी 51 ना. 51 52 वही कंटिन्यू करें. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो. हेलो हरे कृष्ण. ना माताजी नेक्स्ट कोणी विसरले हांव करता म्हणे. हा ओके ओके माताजी आता पडियार तुम्ही कंटिन्यू करा. मागीर मंदाकिनी माताजी सांगतली. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यूढस्य च विविक्तसेविलग्वासी यक्तावाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. 53. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. भक्त्या मामाभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः. सर्वकर्म मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति. अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यति विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. हरे कृष्ण. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति. भ्रामयन् सर्वभूतानि त्रारूढानि मायया. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया स्मृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा. इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. इदं ते नातपस्कायं न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं
न च मां योऽभ्यसूयते य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। हरे कृष्ण। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादो मावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। शकुंतला माताजी स्टार्ट करूया तुमका। श्रद्धवाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चिदेषु तं पार्थ स्वयेकाग्रेण चेतसा कश्चिज्ञानसम्मोहन प्रणतास्यते धनञ्जय। हरि ओम्। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्ण। व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कर्यतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद। भारी लायक जावन गीता जयंतीचे आयचे सेशन भागवत पुराण कोंकणी पकेर चंद कोण सगळ्यांनी अटेंड केलेलं आसा। तंतु 350 इंचे वैरी बांधवा त्यांनी अटेंड करून इतले लायक जावन कृष्णाक समर्पण केलेलं आसा। आमगेलो टू आता एड्रेस करू आसाची हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी त्यांनी गोवर्धन इको विलेज तकून जॉइन जाता आसाची तांकां आमी श्री रवींद्र मल्यमा म्हूण आपयता आसाची तांकां 2 शब्द उत्तर सांगूक अनुग्रह करूक स्वागत करता आसाची। प्रभु ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तरी सगळ्यांनी
मस्त मेहनत घेऊन हे पुरा कोऑर्डिनेट केल्लें आसा आणि प्रत्येकाने आणि हांव खंय खंय पळयलें की 3 जनरेशन म्हळ्यार अम्मा तिगेल धूव आणि तिगेल धूव अशी 3 जनरेशन श्लोक म्हणटाना हांव पळयलें. मस्त भारी संद करून सगळ्यांनी आणि तांतूय या कोऑर्डिनेटर जे आसा ती तांणी मस्त मेहनत करून इतले सगळ्यांक खंय खंय आता 18 चॅप्टरान तू 78 लोक म्हळ्यार 39 लोकांक तांणी वट्ट करून 2 श्लोक दिवन तांगेल्याक कशे उच्चार करचे कसन करचे हे पुरा तांगेल्याक करून घेतलेलं आसा. अशी हांव मेगेल्याक ऑलमोस्ट 18 म्हळ्यार कोण कोण आहे 2 चॅप्टर्स घेतलेले आसा ती पर्टिक्युलरली तांगेर आभार व्यक्त करच्याक मिस रीना कामत, हर ग्रेस सत्यरूप देवीदासी सॉरी, मिस भारती पै, मिस विद्या पै, मिस मंदाकिनी शणाय, मिस रेणुका प्रभु, हर ग्रेस राधा कृष्ण रसार्णव प्रभु, हर ग्रेस राधिका भाव माताजी, स्वाती प्रभु आणि 2 चॅप्टर घेतलेला आसा 8th आणि 9th, किरण पडियार प्रभुजी, स्वाती कामत, डॉक्टर अपर्णा प्रभु आणि 2 चॅप्टर घेतलेला आसा 12th आणि 13th, माया नायक, प्रवीण प्रभु, हिज ग्रेस माधव चरण प्रभु, हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी आणि 18 चॅप्टर दिव्या कामत. आणि पुरा सगळ्यांनी इतलं पुरा कोऑर्डिनेशन इतले दीस कोण कोऑर्डिनेट करून इतले सगळ्यांक आपोवन मस्त लायक करून म्हळ्यार अशें एक प्रोग्राम. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एक आयकोच्याक लायक जाता म्हळ्यार की आमगेल्या वेटिंग लिस्ट आशिल्ली म्हणून. जनरली ही अशी वेटिंग लिस्ट आनी जनरली आसना म्हळ्यार ह्या पुरा अशी कार्याक तरी वेटिंग लिस्ट आशिल्ले आयकुच्या लायक जाता की लोकांक आनी काही श्लोक आनी म्हणच्याक एक तांकां एक आनी काही अवकाश जावका म्हणून आमी लागत आसा त्या तांकां. तरी आज आमी आमगेल्या हांगा गोवर्धन इक्वेलाच्यान तुवें सकाळी आमी भगवद्गीता पुरा 700 श्लोक एका हातूंत बसून 2.5 घंटे भितर वाजिल्ले. मागीर सांजवाळ्या एक आमगेल्या योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स जाता आशिल्ले थंय आमी एक थोडे श्लोक आनी पुरा वाजून थंय मिनींग वाजिल्ले आमी थोडे हातूं. तरी तशी सकाळ कडेन भगवद्गीतेचो प्रचार जाता आसा. तशीच डिसेंबर म्हयनो बुक मॅरेथॉन आमगेल्या शिला प्रभुपाद बुक्साचे मॅरेथॉन जावन आसा. त्या निमते आमी कितले चड जाता की तितले आमी भगवद्गीता आनी बाकीचे प्रभुपादाल बुक्स कितले चड जावन वांटूचे जाता. स्मॉल बुक्स आसा, भगवद्गीता आसा, भागवतमा सेट्स आसा ती ह्या पुरा कितले जाणांक वता तितले जाणां तांगेल्या उद्धार जावचो म्हळ्यार त्या भौतीक जगतान नको आमी स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक कशी वचचे येता म्हणून तांकां एक मार्ग दाखोवन दिता ह्या पुरा पुस्तक. आनी कशी कृष्णान अर्जुनाक पुरा वेगवेगळे पुरा कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग किंवा अष्टांग योग या सांगून फायनली भक्ती योग शिकवून आणि लास्टाक 18.66 सांगतो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. म्हळ्यार तू म्हाका शरण आयल्यार तुका कसन काय पाप आनी आसा त्या पुरा नाश करता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी कंप्लीट कृष्णांक शरणागत गेल्यार आमगेल बाकी कसनय चूक आनी जावन आसल्यार म्हळ्यार कसनय पाप आनी आसल्यार त्या पुरा देव नाश करता म्हणून सांगिल्लें आसताना. तशेंच आमी कांचीपुरमांतू वरदराज स्वामी दर्शन घेवच्या वताना थंय तांगेल्या हातांत मासुच म्हणून बरयलेलें आसा. मासुच म्हळ्यार तूं भिवका म्हण ना अशी. तरी ह्या पुरा अशी मस्त. तशेंच कांचीपुरमांतू त्या वरदराजाक रामानुजाचार्य तांगेले गुरु कांचीपूर्ण
आणि तांगेले सेव करता आशिल्ली ती वरदराजाली तरी रामानुज तांणी भगवद्गीता वाचीत आशिल्ली तांकां एक प्रश्न येता की देवान म्हणला मू की तुम्ही शरीर सोडता तुमगेलें शरीर सोडताना देवाल उडगास करता म्हणून तरी तागेल गुरुला निमगिता ते रामानुजाचार्य की आता आमकां उडगास आयल्यार जालना म्हळ्यार आमी वतात वापस बॅक टू गॉड हेड म्हणून आमकां उडगास येना जाल्यार मागीर कसान जाता म्हणून तर त्या रामानुजाचार्य तांगेल गुरुला सांगता ती तांगेल गुरु वरदराजाक सद्दांची च्या मार दाखयता आसता ती आनी देव थंडी येवन त्या तांगेल सेव स्वीकार करून तांगेला उलयता असतात काही तर कांची पूर्ण निमगिता ती अशी मेघाल शिष्य रामानुजाचार्य तर त्यांनी प्रश्न निमगिला की आमगेले शरीर सोडताना आमकां तुगेल उडगास येना जाल्यार तागेल कसान गत दिता म्हणून तर देव सांगता काही की ताका मेघाल उडगास येना जाल्यार ताणें इतले पुरो सेव केल्ले निमती हांव तागेल उडगास करता तशी म्हळ्यार आमकां कसं आमगेले म्हणटा ती कफ वात पित्त आनी इतले पुरा प्रॉब्लेम जातात आमी शरीर सोडताना की तेन्ना आमगेले शरीर तितले देवाल उडगास करच्याक साथ दिना जाल्यार आमकां आमी जे काय आमगेले जिवनांत सेव केल्लेले आसा ती देव उडगास दवरता आनी देव आमगेले त्या क्षणाक स्वता ताण येवन आमकां उडगास दिवचे आसता गेलो आनी तशी करून आमी तागेले गोलोकधाम वृंदावनांत वचचे साध्य आसा म्हणून भगवद्गीतेंत आमकां पुरा कडेन म्हळ्यार ताणें कृष्णान कर्मयोग सांगताना भक्ती योगा विशयी उलयता ज्ञान योग सांगताना भक्ती विशयी उलयता आनी अष्टांग योगा किंवा ध्यान योग करताना भक्ती विशयी उलयता आनी पुरा सार कंप्लीट भगवद्गीतेचे सार भक्ती योगूची त्या आमी समची वजेल्यार आमकां ते दिसून येता आनी खाली आमी भगवद्गीता वाचिताना आमगेले एक ध्येय आसूं की आमी देवाल विशयांत कितले चड करचे जाता ह्याची आमकां देवाल कंटिन्युअस उडगास कशी करूं आमी म्हणून प्रभुपादान आनी चैतन्य महाप्रभून मेनली हरे कृष्णा महामंत्र दिल्लो आसा आनी आमी पळयता ती भगवद्गीतांत प्रभुपाद पुरा कडेन की केन्नाय आमकां देवाल उडगास करता जाल्यार आमी हरे कृष्णा महामंत्र करून जी उडगास करता देवालो म्हणून सांगिल्लो आसा तरी आज प्रोग्राम आमगेलो पुरा कॉर्डिनेटरांक मस्त मस्त धन्यवाद तांणी पुरा इतले चंद करून कॉर्डिनेट करून आनी तू मस्त मेहनत लागता आनी तू मस्त टाइम लागता तांणी तांगेले पुरा बाकी पुरा काम सोडून इतले पुरा मेहनत करून ह्या प्रोग्राम कशी सक्सेसफुल जावेत म्हणून पळयलेलें आसा ताका मस्त मस्त धन्यवाद हांवें सगळ्यांनी नांव घेतलें आसा तशींच मुरलीधर चरण प्रभू तांणी सखी चरण माताजी आनी दोगांनी मस्त मेहनत करून ह्या इतले पुरा सगळ्यांक कॉर्डिनेट करून ह्या पुरा प्रोग्राम सक्सेस जावं तशें केल्लें आसा तरी मस्त मस्त धन्यवाद आमकां श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा वृंदावन बिहारी आनी बाकी पुरा तंगेले गांवां आशिल्ले इश्ट देवता सगळ्यांक आमकां आशीर्वाद करता म्हणून आमी मागून घेता ती देवालाक हरे कृष्णा धन्यवाद ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी की जय डिवाइन ग्रेस हरे श्रीला कृष्ण प्रभुपाद की जय जय सगळाले बेनिफिट करते श्रीला प्रभुपादान भगवद्गीता as it is preface अंतु लास्ट बरयलेलो पास सगळाले खातीर वता आसा कसं म्हणल्यार our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad Gita as it is, आम्ही Bhagavad Gita यथा रूप तक कसं सांगता श्रीला प्रभुपाद anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad Gita must take help from Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the direct guidance of the Lord.
ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ देवची कथेरी भगवद्गीता कृष्ण भावनामृत कोण असत अंगेल बघे तुकुनु ऐकूचेक प्रयत्न कोरका आणि ते कशी आमगे जीवनान उपयोग करूं म्हणलंतू प्रयत्न कोरका. We hope therefore that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is, as we have presented it here. Srila Prabhupada सांगता असा जननपुरा हे भगवद गीता यथारूप कश्यंग बरायला तशीच मना करून घेवचे प्रयत्न करका आणि कडेर सांगता कसं म्हण पळायच प्रतांनी. And if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. इतली फोड आचार्य जावन शिला प्रभुपादा त्यांनी सांगता असच की कोणी एकलो भक्त जल म्हणून जाल्यारी ते ताचे सक्सेस जावन काण घेता म्हणून तेन्ना कितले विनम्र भाव आसता तांगेले हे भगवद्गीता यथारूप आमकां दिवचेक तेंचे जलतितले हे भगवद्गीता यथारूप वाजूक प्रयत्न करयाची. श्लोक वाजील तशीची ताची अर्थ नंतर ताजे परपट म्हण आसा तांतू डिटेल जावन बरयल्ले तांतू मस्त लेसन्स आमगेले डेली लायफान तूं एप्लाय करचो जाल्यार लेसन्स आमकां मेळता ते वाजूक प्रयत्न करता म्हण सांगून मागून घेता आसा. आतां हे कोऑर्डिनेटर्सान ग्रुप क्रिएट केलेलो आसा. येवचे 8 दीस आमी भगवद्गीता एक्सप्रेस म्हळ्यार डेली एक चॅप्टर तांतू घालताची. तुम्ही ते डेली त्या चॅप्टर ऐकून ताचे अर्थ ऐकून तुम्ही आय हॅव रेड म्हणल्यार ते ग्रुपान घालची तशी पळयाची. तशी 8 दीस आमकां कशी मुखार सुया म्हणून पळया भगवद्गीता पुरो ऐकूचेक. आता दोन श्लोक वाजूक आयचे अवसर मेळ्ळेलो आसा जाल्यार ते 8 चॅप्टरय ताचे श्लोकय ताचे अर्थय वाजूक प्रयत्न करूया म्हणून मागून घेता आसा. थँक्यू श्री राधाकुंड प्रभुजी. सक्कड कोऑर्डिनेटर्साक नमन करता आसा. पूरा पार्टिसिपेट केलेला 350 बांधव तांकां तांगेले फॅमिली मेंबर्साक पूरा धन्यवाद. कृष्ण परमात्मा तुमकां बरें करो आनी मुखार सुनी जल तितले प्रोग्राम जॉइन जावचे पळयाची आनी भगवद्गीते श्रीमद भागवतम वाजूक प्रयत्न करयाची. तुमकां केन्ना फुरसत आसा तेन्ना भागवत पुराण कोंकणीच्या यूट्यूबा लिंक की झूम लिंक की पळयात. जॉइन जायनातले जण जॉइन जावयात की मंडे वेनसडे आणि फ्रायडे सॅटरडे 4 दीस वारांतू संजे 8:30 तुकून 9:30 ताई रेग्युलरली प्रवचन जाव भजन जाव कीर्तन आसता तांतू जॉइन जावयात. आयचे सेशन बामण बायलेल सेशन आसा श्रीला प्रभुपाद अनुभुक्का बकेर भगवद्गीता बगन तूच आसता जाल्यार 8:30 तुकून 9:30 आशिल्ले त्या सेशनांतू अटेंड करूं पळयाची. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. प्रभुजी तुमगेल परमिशन आस म्हणून जाल्यार सकाळी परमिशन आस म्हणून जाल्यार आयचे सेशनाक विराम देवयेत. हरे कृष्ण. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गीता जयंती महोत्सव की जय. इस डिवाइन डे श्रीला प्रभुपाद की जय. जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.